हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। इंटरेस्टिंग कैंडल सीरीज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं युवार और आज का हमारा पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट स्पेशल जोन। और क्यों ये है, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ये देखिए आखिरी कैंडल। इनफैक्ट लास्ट वीक आल्सो this stock was there, and in the previous week also it clearly gave an indication that it is coming down, but in this week the stock is down 10%, which is a very big move, and that is why it is listed here. In fact, another video is going to come up in the next couple of days, especially on Adani ports, and that is going to be very interesting. Stay tuned for that. अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स क्यों ये नहीं हो रहा है? एशियन पेंट्स, अरे एशियम हो गया। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट, look at this, it is reached a swing high. फिबोनाची जो एक्सटेंशन था वहां से वापस नीचे आया, डब्ल्यू पैटर्न क्लासिक कंप्लीट किया उसने, 100% रिट्रेसमेंट को टच किया एंड इन्वर्टेड हैमर, thrown away completely, down 5.55%. A very prominent stock like Asian Paints. So थर्ड स्टॉक हमारा है हीरो मोटर्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका समय ज्यादा व्यस्त ना हो, इसके लिए नाम बाय हार्ट रखता हूँ सब, जितना हो सके उतना। ये देखिए डाउन 7.71%, 200 डे मूविंग एवरेज ब्रोकन, 20 डे broken, then 200 day, and now 50 moving average is also approaching 40। या तो ये यहाँ पे आके रुक सकता है या तो फिर all the way down here। And I'm told that this is a high dividend yield stock, so मुझे मालूम नहीं है कितना है डिविडेंड दे रहा है, लेकिन वी में इट में बी वर्थ लुकिंग एट। जेएसडब्ल्यू मारुति और गुजरात पीपावाव, जेएसडब्ल्यू स्टील। इस महीने में, इस हफ्ते में काफी सारे इंटरेस्टिंग कैंडल्स है, लेकिन आई कैन नॉट इंक्लूड एवरीथिंग ओवर हियर, अदरवाइज यू विल बिकम bored and this list will become endless. So I have chosen sector wise to the extent possible. 5.5% once again, but look at the gap down. That is one of the reasons why I have taken this severe negativity इसमें आई थी metals में, led by JSW Steel and Tata Steel, मारुति। और तो सेक्टर ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया है। और ये देखिए मारुति की कैंडल, वाह, 1 2 3, तीन कैंडल लगातार उसने, चार कैंडल पॉजिटिव दी थी और एक कैंडल ने पूरा खात्मा कर दिया ऐसा लग रहा है। 5.5% वंस अगेन मारुति। और इस मारुति का प्रॉब्लम ये है कि 5.5% ऑफ 9,000 रुपीज, विच इज 450 पॉइंट्स की मूवमेंट है। 100 रुपये, 100 का लॉट है, तो 450 पॉइंट की मूवमेंट, चांदी हो जाएगी 45,000 एक हफ्ते के अंदर। ऐसा है गुजरात पीपावाव, पेटीएम एनआरबीएल। गुजरात पीपावाव, गुजरात पीपावाव एक पोर्ट है, जीपीपीएल उसका पहले एब्रिविएशन था, हाँ अभी भी वही है, गुजरात पीपावाव। एंड व्हाई आई हैव चोजन दिस इज बिकॉज ये देखिए 3 consecutive वीक्स and see the range from 101 back to 87। वापस उसने कोशिश की, लेकिन वही rejected at higher levels, it did not even reach 100। और ये लोअर हाई कंसिस्टेंटली बनाता गया, लोअर लो भी बनाता गया। क्लासिकल डाउ जो थियरी है उसके ऊपर ये चल रहा है, तो ये बहुत ही खराब किस्म की मूवमेंट्स है इसके अंदर। ये देखिए हाई विक्स, तो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू ट्रेड, but still I have kept it under watch list because there are a few others who require my opinion to be given on that. Paytm and RBL, Paytm, Paytm आएगा 197 communications। You see the candle looks so small, but that candle is of 8%, and decisively 20 moving average has been broken। ये देखिए शुरुआत ऐसी कैंडल से होती है, इन्वर्टेड हैमर, रिजेक्टेड एट द रेजिस्टेंस लेवल एंड देन स्टार्ट्स द सेलिंग। सो अगर आपने 850 के आसपास बेच दिया होता
इस स्टॉक तो आप ऑलरेडी 150-200 रुपये के प्रॉफिट में होते थे, रादर आपका लॉस उतना कम हो जाता था। आरबीए, बर्गर किंग, आई लाइक बर्गर किंग बिकॉज उन्होंने क्या कर दिया कि बर्गर किंग का कूपन बेच दिया। मैं इसके स्टॉक होल्ड करता हूं तो फॉर अ चेंज दिस इज अ पॉजिटिव कैंडल, 4.5% के ऊपर का मूव है, बट the reason is very simple. RSI is approaching 60, just below 60, and this has broken the resistance and taken support from 20 moving average. And this has also broken 50 moving average. So this is a good stock in my opinion, and that is why it is listed here. IGL, Midani, Bharat Forge. इस हफ्ते में there are many scripts which are getting listed here for the first time possibly, because that shows that there are so many stocks that have broken down once again. This is three back to back, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. This is the reason why I have chosen for everyone to know that this is how it is happening. See the levels constantly. There are ये क्या बोलते हैं इसको, विक्स जो है ऊपर ही है और जो कैंडल का पोर्शन नीचे आ जाता है. दिस इज नॉट अ गुड साइन. मिदानी, हम रिंडानी है तो मिदानी होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है ना. मिश्र धातु निगम, लुक एट द गैप डाउन. ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल है उसकी ऑलमोस्ट रिवर्सल कैंडल लग रही है ये. बट द ओनली पॉजिटिव थिंग दैट आई सी हियर इज आरएसआई इज at 60, and Bharat Forge. Bharat Forge is, I think, a negative candle. If I recall, yeah, big negative, 7%. And look at this. ये bearish engulfing, inverted hammer, and वापस ये देखो. This is super bearish. एक दो तीन चार, एक के बाद एक कैंडल्स नीचे ही आती रहती है, and this is where it is creating problems for the people who are holding this script. KSCL, Mazagon Dock and RS Software. KSCL, किसी ने मुझे पूछा था 2-3 हफ्ते पहले कि टीवी पे रिकमेंडेशन आ रहा है कि वी शुड बाय एंड ऑल दैट. नाउ एंड नॉट 2-3 हफ्ते पहले, यहाँ पे पूछा था तो मैंने बोला टुडे ओनली इट इज ब्रोकन 200 मूविंग एवरेज. दैट वाज अ फ्राइडे, सो आई डोंट थिंक यू शुड बाय. But then the person bought and it moved up money यहाँ तक गया. So that person was very happy. But today look at it where it is, way below, and it is broken even 1 year low. And now I think it is going to test the low of 20, somewhere in 20 April 20 में जो लो था वो टेस्ट कर रही है. So these are the things where you should be careful of, and you should be following a process that works for you. Mazagon Dock. Again, this is a positive candle. Look at this, 10% up. यहाँ से उसने जो ब्रेकआउट दिया है 270 के आसपास से 220 rupees. Frankly speaking, I have missed this particular stock because I did not have funds at that time. और फिर मेरा रिस्क एपिटाइट के ऊपर ये निकल गई बात. तो यहाँ पे मेरे पास फंड आया तब तो बात काफी आगे निकल चुकी थी. And but never mind, these things do happen, but these give a very good lesson. RSI is also broken out, in fact. That is a very surprising thing. So this can hit the roof. अगर आप प्रोवर्बियल इंग्लिश यूज करें तो RS सॉफ्टवेयर, मेरे ख्याल से RS सॉफ्टवेयर ने शायद 200 WMA को ब्रीच किया है. बाय द वे, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन वीकली मूविंग एवरेजेस. या 200 को टेस्ट किया, it was broken and now it is resting. So this is very critical level, again close to 8%. But look at this bearish engulfing, inverted hammer, and वापस bearish, extremely bearish candle. This has been the story everywhere. You see now Tata Teleservices, Tata Metalics. टाटा टेलीसर्विसेज मेरे नजर में है, अगर वो लेवल पे आ जाए तो बाय कर लेंगे. टाटा टेलीसर्विस मूव्स इन अ वेरी टिपिकल मैनर. ये देखिए यहाँ से, जबकि भाव 20 रुपये के आसपास था या 20 रुपये के आसपास था इन मे 21, एंड वहां से लेके इट इज गॉन एंड टेक मेड अ हाई
of around कहाँ तक 300 रुपीस के आसपास का हाई बनाया, वापस नीचे आ गया है 165 पे। यहाँ से मैं डबल जो बॉटम थी वहां पे आने की इसका इंतजार कर रहा हूं मैं, एंड इफ दिस पर्टिकुलर थिंग कम्स देन आई मे जस्ट गो फॉर इट, right? I showed you Tata Metallics because teleservices, because even after this strong bullish candle, there is no follow through, and immediately this move was reversed. So when candles like this are occurring on any chart, you should be very careful and you should just not enter the stock because it has come down. The next is Tata Metallics. न्यूज आया था कि भाई जो भी मेटल वाली कंपनी है टाटा की सब कंसोलिडेट कर देंगे, शायद इसके लिए इसका डाउन हो गया रहेगा 5.5% डाउन। once again this candle followed by another red candle. So this is the situation. These are not red candles but still the it is a red. This is what I like. बैकग्राउंड मुझे ब्लैक अच्छा लगता है, इसके लिए रेड नहीं है, नहीं तो आंखों को तकलीफ देने वाला काम हो जाएगा। एंड लास्ट टू आर राजेश एक्सपोर्ट्स एंड वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। राजेश एक्सपोर्ट्स मुझे एंट्री करनी है इस स्टॉक के अंदर, बट ये देखिए, इट इज नॉट बीन गिविंग दैट काइंड ऑफ एंट्री लेवल ओनली, इट इज जस्ट टॉपिंग आउट, उसमें से रिवर्स ही मार देता है। सी द विक्स, and we have to wait for the right level. Shayad 500 may be a good level to enter as far as I see. And of course, Westlife Development. Westlife Development also has an interesting set of candles. That is why I have chosen here. Now you see here this particular candle. This is a strong bullish candle, but उसका momentum निकल गया, थोड़ा fizzle out, ऊपर गया, वापस kind of it is given ऊपर wick also left, नीचे भी wick उसने leave कर दिए, then comes almost bearish engulfing, and then again now bullish engulfing, but with long wicks. This is not the kind of stock that one should look at. I was holding, I exited somewhere over here, I think. I did not re-enter because I am not comfortable with these kind of movements जहाँ पे लंबी लंबी विक्स रहती है ना, मुझे दूर रहना है इन स्क्रिप्ट से। उससे अच्छा तो इट इज बेटर टू ट्रेड इन सिंपल स्टॉक्स लाइक निफ्टी में जो है 50 50 500 100 where the movement will be more or less in line. So that's it for now from our side, and I hope you have liked this video, and if you have found something more interesting other than what we have already shown you, please do not hesitate and share the same with us. Thank you and happy trading.